वेलकम टू सुधीर क्लासिक गोल्फ 2013। सुधीर का ये सेकंड इवेंट है और आज शुरुआत होगी उस इवेंट की जो अपने मायनों में बहुत खास है, क्योंकि सेकंड इवेंट है और बहुत सारे प्लेयर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभी सुबह का मौसम है, देखते हैं कैसे बदलता है मौसम और कैसे बदलते हैं प्लेयर्स के रंग। चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी भी चेहरे पर नींद का नामो निशान नहीं है। Rather, all the faces look fresh। और हो भी क्यों ना, सुबह सुबह ये लोग एक्साइटेड हैं अपने दोस्तों के साथ अपने फेवरेट स्पोर्ट को खेलने के लिए। गोल्फ एक ऐसा गेम है जो दोस्तों को मिलाने का काम करता है और आज का टूर्नामेंट भी खास है। क्यों, आइए जानते हैं। मुझे तो थोड़ा आइडिया है कि सुधीर सेठ अच्छे जनरेटर बनाते हैं, पर मुझे लगता है आज मौसम भी इन्होंने खुद ही बनाया है। I always look forward to playing in this event and I know how much you have gone through। 300 लोगों की वेट लिस्ट है, कैसे उसमें से 150 आपने फिल्टर किए होंगे। So I felt I was lucky to be invited in this। Everybody would like to participate in this tournament। You see the response, a poor fellow, he couldn't accommodate everybody। That shows the people how much people love this and love this tournament। We are from Kashmir। We came only to play this tournament। I think a lot of giveaways and lots of people who are just harassing him that many more people would like to play again more with his tournaments, and he must be having a lot of pressure on that। Good sun for a good game of golf। It's a lovely golf course, it's a lovely tournament, but my golf is not up to scratch। चीफ गेस्ट फारूक अब्दुल्ला भी आ चुके हैं। Whatever you did in wind turbine and now in solar, it is so phenomenal that today you find that probably solar is there on every rooftop। आप देखते हैं, यहाँ भी देखिए रूफटॉप पे आपको दिख रहा है वो पैनल लगे हैं। Correct। और अब हम सारे विलेजेस जो हैं, जो मिनिस्ट्री है पावर की, उनके साथ बैठ के, जहाँ पावर की लाइन नहीं पहुँची है और पहुँचने में भी वक्त लगेगा, उनको सबको हम लोग इसी सोलर से और विंड से और बायोमास से हम बिजली देने वाले हैं। आज की स्पेशल ओकेजन के लिए नेवी बैंड की परफॉर्मेंस माहौल को खुशनुमा बना रही है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लोगों का तांता लगा है। पुराने दोस्त मिल रहे हैं और नए दोस्त बन रहे हैं। But just like no one can worship God on an empty stomach, similarly, no one can play a sport. Fabulous weather, great atmosphere, immense warmth and hospitality of the organizers, and I think simply a great golf course। So you can't have a better mix and a gorgeous combination for golfing। The moment we get the invitation, we cross that day for playing the tournament। It's very nice. It's very nice, nicely arranged. You meet a lot of people. You tend to know many friends which you met earlier। It's very nice. It's very nice। बहुत बढ़िया। I mean, full marks to them for organizing such a beautiful event। You're making so many golfers so happy। These up the standards so much is going to be difficult for the rest of us who have these tournaments to keep up with the standards that Sudhir and Indu have set now। खेल की शुरुआत से पहले it's time for inaugural shots। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस C.K. प्रसाद, जस्टिस विक्रमजीत सेन, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल D.K. जोशी, जस्टिस G.S. सिस्तानी,
ये सभी खिलखिलाते चेहरे इन्हीं गुब्बारों के अलग अलग रंगों की तरह है जो यहाँ आकर मिल गए हैं। You know, electric mix of people from judiciary, from the business, from bureaucracy, and from friends. So it's lovely weather. Course is playing beautiful, and we're all enjoying it. Best part about golf, when you play golf, you meet people from different walks of life. You meet people here, you meet them in a relaxed environment, and immediately you hit a friendship with them. The weather is great, and playing golf in this weather is just too good. यहाँ पे तो there are people from all walks of life, and judges हैं, defense है, other civil dignitaries, even from embassies. So this is entirely different and a good feeling. इनॉग्रल शॉट्स के बाद अब सभी चल दिए खेल की ओर। जस्ट लाइक द लास्ट ईयर ये टूर्नामेंट खेला गया दिल्ली के बीच बने कुतुब गोल्फ कोर्स पर। इस गोल्फ क्लब का नाम पड़ा दिल्ली के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट कुतुब मीनार पर, जो देता है इस कोर्स को एक बढ़िया बैकड्रॉप। 110 एकड़ में फैला ये गोल्फ कोर्स है भारत का पहला पब्लिक गोल्फ कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि कोई भी यहाँ फीस पे कर खेल सकता है। यहाँ खेलने के लिए मेंबरशिप की जरूरत नहीं। इसे डिजाइन और डेवलप किया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। We don't have exclusive membership जैसे रहते दूसरे प्राइवेट क्लब्स में, वो नहीं है। So हमारा सब पब्लिक फैसिलिटी है। Similarly we have a second one बलसोवा गोल्फ कोर्स, वो 9 होल की है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं और उसका ही शायद साल के अंदर बहुत अच्छा गोल्फ कोर्स बन जाएगा। I find that there's a lot of improvement in this golf course. This club has so many flowering trees. Honestly, for me this is the best club in Delhi. जो फेयरवेज हैं, जो ग्रीन्स हैं, जो टी बॉक्सेस हैं, इतना अच्छा मेंटेन किए गए हैं। What kind of similarities do you find between cricket and golfing? Because you are still a very active cricketer as well. I think you need to respect the game, because mother cricket and mother golf have a funny knack of biting you really bad. You could have the best of days and next day you turn up and you could have the worst of days in cricket, and you could play wonderful 2 rounds and then you could have 2 triple bogeys. You should know your putting, you should know your tee shots, you should know your short game. So if even one department is weak, you cannot become a good golfer. That is like business. So you must be master of all the departments. This is one game where you know the character of a man, because it's played with the determination and full of character. Golf teaches you the actual life lessons. Sometime tight, sometime ups, downs come. So today we are playing in this windy. It's itself a good experience to learn something. Golf में ये कहा जाता है कि that you never play golf with anybody, you play golf with yourself, and that's why you have a handicap. Similar thing in your business. Every day you are hoping that you do something better and you excel yourself. So same thing you try in golf. Golf मेरे life का एक बहुत important part है. मैं 30 years से खेल रहा हूँ golf. So we are passionately driven people, whether it's Sudhir with his passion, not just for the sport, for his work. Similarly, all of us are like that. golf बड़ी qualities होती हैं जो life में required होती हैं. Patience, consistency, clarity of mind, all the things that we seek to achieve, spend a lifetime trying to achieve, right? You all need it all on the golf course? Golf से बहुत सीखते हैं हम about life itself. मतलब ज़िंदगी के बारे में भी कई lessons होते हैं golf में. To take the victory and the defeat with a certain similar spirit की मतलब उसी तरह से आप रहें, चाहे आप बहुत एक दिन बहुत बुरा खेलें, एक दिन बहुत अच्छा खेलें. और उसके अलावा इट इज़ अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर कि 5 घंटे आप एक मैदान में हैं, उसमें आप कितने बार गुस्सा होंगे, कितने बार आपको दुख होगा, कितने बार आप सुखी होंगे. तो ये भी पता चलता है कि आदमी कितनी इक्वानिमिटी से खेल सकता है, कितने रिलैक्स होकर खेल सकता है. सुबह काफ़ी ठंड थी और फिर बदल गया मौसम का मिजाज, काफ़ी हवा चलने लगी और गोल्फर्स स्ट्रगल करने लग गए एक अच्छे गेम के लिए. चलिए अभी वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद देखेंगे और एक्शन और ज़्यादा रिएक्शन गोल्फर्स की तरफ से.
वेलकम बैक टू सुधीर क्लासिक गोल्फ 2013। वाकई कुतुब गोल्फ कोर्स और सुधीर क्लासिक गोल्फ जैसे इवेंट से गोल्फ को बढ़ावा मिल रहा है। चलिए जानते हैं, वापस ले चलते हैं आपको कोर्स पे और देखते हैं क्या एक्शन चल रहा है कोर्स पर, और साथ ही साथ देखेंगे क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स गोल्फ को बढ़ावा देने के लिए। गोल्फ एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बट लकीली इंडस्ट्री इसे बैक कर रही है, लेकिन अब भी इसे बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ करना बाकी है। यहाँ अच्छा रिजॉर्ट्स है, अच्छा होटल एटमॉस्फेयर है, एंड यू गॉट द इंडियन हॉस्पिटैलिटी विच इज़ ग्लोबली गुड स्टैंडर्ड। सो मेरे ख्याल से इंडिया कैन डेफिनेटली बी नाउ द गोल्फिंग डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड गोल्फर्स, आई एम श्योर। थोड़ा टूरिज्म बॉडी को थोड़ा हमें सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, बिकॉज गोल्फ इज़ एक्सपेंसिव गेम। 12 महीने यहाँ गोल्फ खेला जा सकता है, जबकि यूरोप और अमेरिका में 3 या 4 महीने से ज़्यादा गोल्फ नहीं खेल सकते, और वहाँ कैडीज़ की इतनी प्रॉब्लम है। गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके लिए छुट्टी वाले दिन भी सुबह सुबह आने में कोई नहीं अलसाता, क्योंकि गोल्फ के यकीनन बहुत फायदे हैं। I used to get very angry very fast, but now you learn to play golf, you learn to play to yourself, and you cool down yourself, your anger level is gone down, and then you're playing with friends, you know, and at the end of the day you get a good meal, you know, that's even more important. I used to generally get very aggravated earlier. Ever since I started playing golf, learned how to control yourself, and that's what golf has taught me, to be patient all the way. Golf is also very relaxing. Being a doctor, सारा दिन you are busy working, so golf really takes away a lot of stress. Particularly during summers, 5:30 भी आप आ सकते हैं, तो by the time people get up, आप जो है you are back home and you can start your work. गोल्फ के लिए कैसे टाइम निकालते हैं आप? यही थोड़ा कष्ट है कि जितना चाहूँगा उतना टाइम नहीं मिल पाता है, और वो गेम में जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसा आपने अभी देखा है। I believe that the busier you are, the more you need some hobby to take your mind away and get back rejuvenated and work better. After a day's work, particularly when I play in the mornings, and I find spending 2.5 hours, 2 hours on the golf course is very refreshing and very something I look forward to it. Bob Hope का एक famous quote है, If you watch a game, it's fun. If you play it, it's recreation. If you work at it, it's golf. और यहाँ आए प्लेयर्स का भी यही मानना है। 5 hours on the course, no telephone calls, no cash flow issues, and no strategic directions. Across the board जो डिप्लोमेसी से, ब्यूरोक्रेसी से, बिजनेस से, जुडिशरी से लोग इकट्ठे होते हैं, तो while they are golfing, views exchange होते हैं। I am very excited and the standards have gone up and the hospitality is superb. It's my second year I'm participating in this tournament. Very good arrangements. Everything is excellent. Very good weather, that's first, and very good organization. Because they have really created a lot of interest in the golf. Very nice. Excellent. Beautiful day for golf. Beautifully organized. Excellent hospitality. As far as this hospitality is concerned, you should get 10 out of 10. Very well organized, very well managed. Today is really awesome. He is number one in that. We don't beat Sudhir Seth for that. He's a great guy in that, you know. It goes with him. This tournament looks to be setting up the new standards in the corporate and social golfing. That's what I will say. Very good. Very well managed and professionally done. Yesterday I was at the Mercedes. I think this has even beaten Mercedes. This year, 25 to 30 ladies participated. The request was for a far bigger number, but unfortunately they had to say no to so many. I encourage any woman to try golf because it's a lot of fun, and you know there's no competition with men. It's a nice place to be. टीवी देखने से ज़्यादा ये या सोप ओपेरास देखने से बेहतर है कि सेहत भी बनती है और मज़ा भी आता है और दोस्त भी बनते हैं। Excellent number of ladies. I think almost our group, everybody is playing. खेलने के बजाय हम enjoy कर रहे हैं, company enjoy कर रहे हैं। I am very happy. I am playing my own tournament. See, foremost is that it is a open greenery I get early in the morning and to walk. The game itself
It's very challenging. My first love is golf, and I enjoy playing in these tournaments, and especially with friends, and especially with Mr. Sudhir organizing such a brilliant tournament. I appreciate all this, and kudos to him and his company that they are doing so well और इतना अच्छा organize किया है. And I won a TV, got a par 3 on the second hole, which has made me feel so good and on top of the world. And so is the decor, and I'm dressed with the decor in mind, red and white. Yes, enthusiasm तो बहुत ज़्यादा है सभी में. I'm enjoying. The weather is good. Sudhir is a great host. Indu is lovely person. ज्यादातर गेम्स में अलग अलग देशों के लोग आमने सामने होकर खेलते हैं, लेकिन गोल्फ में सब एक साथ चलते हैं. That you get to know each other in a different environment. So you get to know about the culture also, and Yes, of course. Culture, about the person's culture, habits, you know. I very much like the atmosphere here because people here are real friends and we really enjoy being together. India gave me golf because I started playing here in 2006. That's where I learned to play golf. This is the best time to play golf in India. We are still enjoying winter. And we don't have that in Malaysia because it's humid and, you know, it's a bit hot there in Malaysia. And of course, more importantly is the company that we are having. It is always an excellent period of fellowship that golf provides for people to get together, to network. गोल्फ हर उम्र में आपको फिट रखती है और गोल्फ हर उम्र के लिए फिट है. Anyone can play golf, even from a kid who's 4 or 5 years old. Example, my brother, when I started golf, he thought that golf is good, so he started golf at the age of 4 and 5, and he plays well. For people, I think, who play, it's a big inspiration for all of us to, you know, really get into this game because I don't play at all. But my son, he started learning a bit. So I think the younger generation is going to take it more forward, you know. So that's how we'll drive it through. I started learning golf 2 years ago. Now my plan is to go in one of the tournaments, something like this. गोल्फ जो है 100% ग्रो कर रही है एवरी ईयर. तो गोल्फ में काफ़ी जो है जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी खेल भी रही है. तो आने वाला जो समय है गोल्फ के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा रहेगा. A lovely day like this and a great platform created by yourself. I think it's a great venue and a great format of play. Playing with youngsters again is it takes the game to a bigger level. It can be from 6-7 years to about 80. This is one game you can continue all your life. I can describe it in 3 words: excellent, excellent and excellent. There cannot be better golf and there cannot be a better hospitality. Excellent team work, as well as Sudhir ji and his team has done a wonderful job. God bless them, and they have set new standards in golf. So good, so grateful, so happy. So please keep it up. तो खेल काफी एक्साइटिंग और चैलेंजिंग था, लेकिन अब बात होगी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की. ब्रेक के बाद जानते हैं किसने जीत हासिल की. बने रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक टू सुधीर क्लासिक गोल्फ 2013. गोल्फ लोगों की सेहत बनाता है, लेकिन गोल्फ जैसे किसी भी खेल की सेहत बनाने के लिए ज़रूरी है एक्नॉलेजमेंट और इनकरेजमेंट.